Hello guys, welcome back to our YouTube channel and it's been a long time जो कि हमने आपसे बात की है just because of some technical issues हम लोग अपने vlogs नहीं डाल पाए but I believe कि आपको आने वाले टाइम में हमारे vlogs जल्दी जल्दी दिखेंगे and it's all on him कि ये कितनी जल्दी editing कर सकते हैं और आज के दिन हम लोग we just showing you our daily life so बस अभी मैं लॉन्ग डे से आई थी इनका आज ऑफ था so he was at home और हम लोगों ने सोचा कि आज जस्ट ब्लॉगिंग करें बिकॉज आई वांटेड टू मेक सम जूस सो ही इज़ हियर टू हेल्प मी अलोंग और इन्होंने बिकॉज आई वाज यूजिंग माय अदर जूसर he ordered a new one for me because he wanted the new technology because he likes technology and I haven't opened it yet because I thought I'll open with you guys and I'll show you how does it work and moreover it's new and quite like being talked about on YouTube as well and on TikTok as well. People are using it a lot. So I was thinking, okay, that's fine. Let us use it and let's see how does it work for us. So keep on watching. I'll show you what we got and how we're gonna make our juices now. So guys, this was the previous juicer that I was using. This was gifted by Matai. It was working really good. It's not like there's no any problem with this. But he wanted a new one, so the one we were using was by Cookworks and it was a really good one. So it got all the things including the jar with it, so it's easy to even like drain the juice in the bottles. So it was really good though. We had a nice experience with this. So the one he got for me is this one. I think the brand name is a Frigidaire. It's Frigidaire. I don't know how to say. Well, sorry if I'm butchering the name, but never mind. So I think people have been more talking about the cold pressed juices which you can store for a longer time and it's more healthier as compared to the other ones because it got metal that just like makes the juices and it's not like good to store the fruits juices for the long time and it's not healthy at the same time. So we got this one. Let's see how much we're gonna get from this. And when we were like making juice from this, the pulp was not that much dry, so you can see the जो pulp जो था वो थोड़ा गीला रहता था. They were like probably like wastage of juice and the fruit as well at the same time. But इसके जो हमने reviews and all check किए थे, people used to say that it just gives you like dry pulp. But we're gonna see, obviously we're gonna see and test. And the best thing about it is that you can make sorbet or just like the ice cream here. Just put the frozen fruits, anything like that, and you get a sorbet in the form of ice cream as well. So you can have your fresh fruit ice cream at home as well. So I'm gonna open this and let's see what all we got. I think there are a few things that you'll get. So what first thing is jug and then one sieve, cleaning brush, juicer filter and ice cream filter. That's what I was talking about. So I think when you change the filters you'll get juice, or if you want the ice cream so you get the ice cream with this filter inside. That's it. And yeah, and there are the more about the power setting and I think cleaning and like how you can manage it. That's it, I guess. Yeah, and more you can read it in the manual, I guess. And for the fruit, the thing we have kept prepared is some oranges, fresh oranges that we got. And were they from Costco as well? Oh, you got Tesco. Oh, okay. So he got it from Tesco. These are the golden apples from Tesco as well. They are much better. I prefer golden apples over red ones because they are more tangier and taste well. And then we got some Asda carrots. So in here we don't get red carrots easily. The more carrots that we get is the orange ones. So we both have got used of eating the orange carrots now, and we don't think of like eating red. We sometimes buy it, but it's quite expensive. So if you want to buy carrots here, just buy orange one because it's easy on the pocket. And then he कल गए थे Costco and he got a large like full size
pineapple yesterday. So इनको मैंने आज कहा था कि when I'll come back home we'll do the juicing today. तो इन्होंने पहले से like pineapple करके रख दिया था because it's quite hard job to cut pineapple, and if you like doing it's not even safe because थोड़ा सा वो like uneven skin होती है, and then you have to be more precise and more careful when you're using a knife. So I asked him to do it. So and these are the leftover apples that he got last week. So we'll be using this, and on the top I'll be putting some lemon just as a preservative and just for the taste. So the first thing I can see, just like other equipment that they do with the same company. We got one brush to clean. That's quite nice and steady. And then this one, I guess. You can use the same brush for your toothbrush. No, you can't. You can. You can use it for toothbrush though. You in the morning मैं आपका brush change कर दूँगी. I'll put this in the toilet. Okay. ये मुझे लग रहा है ये juice वाला है. If you see and compare it's the juicer one. These are the jugs. Nice shape jugs. The only bad thing is cleaning. I hate cleaning. I love washing the utensil, but like I don't know. I hate washing uneven utensil because it's hard, and moreover, when it comes to drying up, it's really hard. So that's the two jugs that we got. What else we got? Oh, that's the seed. Channi. Don't use this for chai channi. आटा छानूंगा. Oh yeah, you can do it for atta. Okay, I think that's the top part. I don't know how to use it. No, like this. So this will be like going like this. So that's the another part. Here comes the manual again. Oh, it's a slow juicer. So it's F190 whole fruit slow juicer. So that's the manual. You can go through the manual before using it. So that's the whole body. I don't know how you need to open it up and then that's all we got. So that's the body. It's quite nice as compared to that one. If we see, it's not connected, but it's like what I believe. Like if we compare, it's quite big, and this is quite nice, steady, and small. But let's see if it works well. Then only we can say which one to buy. So I think this will go here. Oh yeah, I'm right. And then this will go here, and this will go here like this, isn't it? Yeah. I want to wash this first, all of it. So I don't know how to disconnect because I don't want to use it straight away. So my carrots are nicely cleaned and washed, ready to use. Juicer parts are also getting dry, ready to use. Pineapples were already ready. और ये सब इन्होंने ready करके रखा है. That's my second chef. Are you excited? Let's see कैसे बनेगा. जो कि हमने इसमें new cheese एक add किया है. That was chukundur. What do you say? Yeah, beetroot. And that's it. Apples and oranges जो कि इन्होंने help किए because it's hard to peel. I don't know how does he do, but it's really hard for me to do it. But he is quite good with it.
टेंगी होता है ना, तो ये फिंगर्स में भी स्टिंगी स्टिंगी होता है थोड़ा। आपके हुआ है? हो रहा? Okay, you didn't told me before. So that's the fruits getting ready. Nearly done, बस होने वाला है। और एक हम इसमें वो भी डालेंगे, लेमन। Where did you keep the lemon? इसको बस थोड़ा सा मैं इसको क्या करूँगी, स्किन को पील करके विद नाइफ, एंड इसको प्रॉपर पूरा ही डालना है। आई डोंट प्रेफर पुटिंग इट विद द स्किन, क्योंकि इससे थोड़ा सा ना कड़वापन आ जाएगा, सो आई डोंट वांट दैट। सो यू आर क्वाइट एक्सपर्ट इन पीलिंग द ऑरेंजेस। Oh, that's why you know. Was it the last one now? Yes. I have two more to go. Okay, till then I'll just peel my lemon. Okay. हम लोगों ने सेट कर लिया है हमारा जूसर। स्लाइटली वेट है क्योंकि इनसाइड से अभी हमने इतना ज़्यादा इसको ड्राई नहीं किया, बस आउटसाइड से कर लिया, एंड इट्स रेडी टू यूज नाउ। सो इस तरफ हमारा स्टेनर एंड द जूसर जार इज हियर, एंड यहाँ पे जो था ये वेस्ट का है, तो मैंने क्या किया, इसमें आई जस्ट पुट अ पॉली बैग इनसाइड जस्ट बिकॉज कि इजी टू यूज होगा। जब भर जाएगा देन I'm gonna take it over and then discard it the bin. Let's try. एंड यहाँ पे इसके पीछे एक बटन है जस्ट फॉर द ऑन एंड ऑफ बटन। आई थिंक एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। आई थिंक व्हेन यू यूजिंग द हार्ड फूड्स, तो फूड्स आप उस टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। लेट्स सी, इट्स नाइस। आवाज भी नहीं है ज्यादा, है ना, एज कम्पेयर टू दैट वन। इट्स नाइस। लेट्स ट्राई। व्हाट शुड आई ट्राई फर्स्ट? I'm trying pineapple. You want mix or you want something special? You want mix? Can you see the juice? And it's just from one slice. Just from one slice. I think कि हमें बहुत ज़्यादा हमने फ्रूट काट लिए इसके अकॉर्डिंग तो। मुझे जैसे लूज लग रहा है। Oh my God, that's too much. ये just 2 slice के उससे ही मुझे लगता है 3 glasses निकलते हैं। Because it's nearly there. So इसको बंद करके I'll do this. Interesting. So हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ज़्यादा ओवरफ्लो कर दिया तो यहाँ से ये थोड़ा वो मतलब यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। So we need to be more careful with the quantity. Like यहाँ तक quantity थी and it was just like sieving it slowly. We need to be more careful with that as well. So duty अब इन्होंने ले लिया है। मैं स्लो मैं जान के स्लो होती हूँ ताकि आप करो काम। That's the trick. Do you know that? हैं? Do you know that? आज के बाद नहीं करूँगा फिर। So कहाँ पहुँचे हम? So you can see the pulp coming out. बीटरूट से देखो एकदम जूस का कलर एकदम चेंज हो जाता है। इवन दो ये काफ़ी ड्राई पल्प निकल रहा है स्टिल उसमें थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि ये लाइक अंदर पूरा प्रॉपर स्ट्रेन नहीं हो रहा। इट्स जस्ट लाइक थोड़ा सा जैसे ना फ्रॉथी सा आ रहा है। सो वी हैव टू लाइक जस्ट गिव इट अ मिक्स एंड देन इट्स गोइंग डाउन। इतने सारे फ्रूट्स पड़े हैं, आई डोंट थिंक सो कि हम सारे यूज़ कर पाएंगे। एंड दैट्स द लेमन जो कि इन्होंने क्लीन कर दिया। सो जस्ट बिकॉज हमारे पास अभी कुछ ऑप्शन नहीं था टू मिक्स, सो अभी हमने इस बॉक्स में डाला है एंड देन लेटर वी गोना ट्रांसफर इट टू दीज बॉटल्स जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाई थी। दीज आर नाइस ग्लास बॉटल्स दैट यू कैन पुट योर जूसेस एंड देन स्टोर इट इन द फ्रिज।
So as you can see, जो कि मैंने आपको बताया था, I don't know how to get rid of this. ये अपने आप आ जाएगा बाहर. वॉश करना पड़ेगा, मैं कर दूंगा इसको. So that's so easy now. And then you can bin this, and this is done. Otherwise इसको आप फिर clean कर दे, sink में फंसता. So I believe that's the easy way. So you just rinse it off. And for this you can see इससे गन कम पड़ा as compared to other one. उससे थोड़ा सा ज़्यादा गन पड़ जाता था. And the only thing I didn't like is this झाग पता नहीं. But we got lots of juice. I'm gonna transfer it to my glass containers now, and then I'll show you in some time. So that's 8 bottles are ready for our juices. So they are literally full, and the last one was just like this much. Never mind, but it really tastes well. So I've stocked my juices in the fridge, and whenever I need it I can use that from there. And this one, I don't think so this is gonna fit here. I'm gonna keep it aside just somewhere here. And that's it for the fridge. Hello, good morning friends, welcome back to another day in our life. So जैसे कि हम लोग रात को बना रहे थे जूस, we made little bit blunders as a beginner with the new equipment, but कोई बात नहीं. जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ वो हमने बाद में रियलाइज किया, जो कि क्या था? कैरेट बोल गए थे हम. कैरेट बेसिकली हमने वॉश करके सिंक के अंदर रखी थी, और जब हम बना रहे थे तो हमें याद ही नहीं था कि कैरेट्स भी डालनी है. तो उसकी वजह से जो जूसेस थे वो थोड़े से स्वीट है, क्योंकि वो मोस्टली फ्रूट्स थे, उसमें कुछ वेजिटेबल नहीं गया था. तो अब उसको बैलेंस करने के लिए वी गोना ऐड द कैरेट्स. सो here they are. And इसको वैसे तो वॉश ही अब हमें वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, बट दे आर ड्राइड अप नाउ. तो थोड़ा सा स्प्लैश ऑफ वाटर करेंगे, एंड उसके बाद वी गोना मेक आवर जूस फर्दर. बेसिकली ये जो बैग्स है मैं यूज़ करती हूँ अपना खाना लेके जाने के लिए, काम के लिए. दीज आर नाइस, स्मॉल है और इसके लिए काफ़ी गुड है. कल भी जब जैसे हमने यूज़ किया, हमने इसको फेंक दिया, एंड इट वाज इजी टू वॉश बिकॉज ये थोड़ा सा अनइवन इसका स्ट्रक्चर है. तो आई बिलीव पुटिंग अ बैग इनसाइड मेक्स वर्क इजियर. सो लेट्स स्टार्ट जूसिंग. फिर भी अभी भी जैसे ये थोड़ा सा झाग एंड लिटिल बिट ऑफ लाइक फ्रूट्स, कैरेट, लाइक क्या बोलेंगे इसको, पल्प इज देयर. और इतनी सारी कैरेट्स करने का सिर्फ एक ये हाफ जार हमें जूस मिला. प्रोबेबली डिपेंड्स कि कितनी जूसी हमारी कैरेट्स थी, बट आई बिलीव हम लास्ट वीक लाए थे ना, सो दे वर नॉट दैट फ्रेश. दे वर लाइंग इन द फ्रिज from like last week, so probably next time थोड़ा देख के लाना पड़ेगा कि more fresh carrots हो. So what we're gonna do, we're gonna mix this in the previous juice just to balance the taste, and then we'll show you what we did. So after that hard work, our juice is ready. So let me ask him to taste the juice now. You want to taste? कैसा? नेचुरल बहुत अच्छा है. इतने सारे 2 किलो फ्रूट्स डाले तो नेचुरली है. बहुत अच्छा. डज इट टेस्ट गुड? बहुत ही अच्छा है. Beetroot is also healthy, so if you suffering with any iron deficiency or HP issues, just have this. Cheers. So you like it, huh? मेरा नहीं हमने रेडी किया with the straw. So I would probably have this now, and this will be my breakfast for today.
सो गाइस अभी आपने देखा कि हमने अपने न्यू जूसर में जूस निकाला और काफ़ी नेचुरल और काफ़ी स्वीट है जूस और हेल्दी भी है काफ़ी। और मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप परचेज कर सकते हैं तो इस ब्रांड का जूसर ज़रूर लें। फिटजा ब्रांड है ये और बहुत ही अच्छा है। बाकी इन्होंने भी टेस्ट किया था तो ये बताएंगे कि कैसा लगा इनको जूस। It was nice, yeah, natural। और जैसे कि दूसरी वाले इक्विपमेंट में the only thing I noticed is कि दूसरे वाले इक्विपमेंट में बेसिकली मेटल वो पार्ट होता है जिससे वो जूस निकलता है, लाइक बेसिकली जो फ्रूट्स होता है मेटल उसमें जाके देन क्रश होता है। बट विद दिस इट्स हैज अ लाइक प्लास्टिक हैवी ऑब्जेक्ट है ना जिससे वो क्रश होता है rather than is it cold compress? Yeah, so basically उससे compress होके जो भी I don't know about the technology but I know that it's more natural and healthier for the body and it tastes really good। It's up to you आपने कौन कौन से उसमें fruits add करने हैं। but at the moment जैसे कि हमें we both like mixed fruit juice and you like orange as well, just yes. Orange, so next time we'll make orange juice। so इतने सारे fruits पड़े थे तो I was like why not to try the mix for the first go and it turned really good। and in future we'll be doing more juicing with some other fruits as well and we'll show you at the same time। so I hope you guys enjoyed our mini vlog of our like showing what we're doing in our day-to-day life and of a vlog of like showing what we got and how was the experience with it and stay tuned, keep on watching our YouTube and that's it for now। ये कुछ आर्टिस्टिक स्टफ कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। पानी क्यों डाल रहे हैं हम? वेल डन। सो दैट्स अ लिटिल डिजास्टर, दैट्स माय हस्बैंड डिड इट। यहाँ पे भी ये पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच चुका है।